accelerate economic growth and development. Road traffic. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 2022-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized to innovate ways of financing to complement the public support. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming in French. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics costs and time, assisting just-in-time inventory management, and eliminating tedious notifications. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility standards for organizing seamless travel for passengers will also be used. Contracts for implementation of multimodal logistics parks at 4 locations through CTP mode will be awarded in 22-23. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railway networks to provide seamless solutions for movement of parts. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains with better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type and scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structure, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. Urban Mala. As a preferred ecologically sustainable alternative to conventional roads in difficult areas, National Roadways Development Program will be taken up
announced as the International Year of Millet. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oilseeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oilseeds will be implemented. For delivery of digital and high-tech services to farmers, with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chain, the scheme in multi mode will be launched. Kisan growth will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise the advice of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget, and organic farming, modern day agriculture, value addition, and management. The funds with blended capital raised under this co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activity for these startups will include monitoring, support for NGOs, especially for farmers on venture basis and farm level, and technology including IT-based support. The implementation of the scheme requires linked policy at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectares of farmers' land, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatts of hydro, 27 megawatts of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Honorable Speaker, sir, draft APR for 5 river dates, namely Daman-Ganga Trust, Tapi Narmada, Godavari Krishna, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri have been finalized. Once the consensus is reached among the beneficial states, the center will provide support for their implementation. For farmers to adopt suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state governments. MSMEs, Udyam, eShop, NCS, and Asim portals will be in the list. Their scope will be widened. They will now perform as portals with live organic databases, providing C2C, B2C, and B2B services. These services will relate to credit facilitation, giving, and recruitment with an aim to further formalize the economy and enhance entrepreneurial opportunities for all. Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate adverse impacts of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic levels. Considering these aspects, the ECG ECLCS will be extended up to March 2023, and it
outlay with outlay of 6,000 crores over 5 years if we rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive, and efficient. Different programs and partnerships with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability, and employability. The national skill qualification framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital ecosystem for skilling and livelihood, the Desh Tax will be launched. This aims to empower citizens to skill reskill or upskill through online training. It also provides API-based facilities to use statements and discovery layers to find the relevant jobs and entrepreneurial opportunities. Startups will be promoted to facilitate growth structure through varied applications and for drone as a service. In select ITIs in all states, the required focus for skilling will be started. Due to the pandemic-induced social growth, our children, particularly in rural areas and those from scheduled caste, scheduled tribes, and our speaker section, have lost almost 2 years of formal education. Most these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, one class, one TV channel program of PM India will be expanded from 12 to 200 TV channels. This will enable all states to provide supplementary education in regional languages for classes 1 and 1 to 12. High quality e-content in all spoken languages will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, and through radio and digital features. A competitive mechanism for development of quality e-content by the teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes. A digital university will be established to provide
Hmm. Okay. What do we?
Centers of economic growth. On the other, we need to facilitate Tier 2 and Tier For urban capacity building, support will be provided to the states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to the mass transit systems. The central government's financial support for mass transit projects and Amrit scheme will be leveraged for formulation of action plans and their implementation for facilitating the TOD and TPS by the states. For developing India-specific knowledge in urban planning and design, and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different regions will be designated as centers of excellence. These centers will be provided endowment fund of 250 crore each. In addition, the AICTE will take the lead to improve syllabi, quality and access of urban planning courses in other institutions. We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. Efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT-based management of records. The facility for transliteration of land records across any of the Schedule 8 languages will also be rolled out. The adoption of linkage with National Generic Document Registration System (NGDRS) with the One Nation, One Registration software will be promoted as an option for uniform process of registration and anywhere registration of deeds and documents. Necessary amendments in the code IBC will be carried out to enhance the efficiency of the resolution process and facilitate cross-border insolvency resolution. Accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration of new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will process re-engineering, will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required
2 years to less than 6 months. Government procurement. Government rules have recently been modernized for the needs of Amritkal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. The modernized rules allow use of transparent quality criteria besides cost and evaluation of complex tenders. Provisions have been made for payment of 75% of running bills mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through conciliation. As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payments, a completely paperless, end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurements. The system will enable the suppliers and contractors to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. To reduce indirect cost for suppliers and work contractors, the use of surety bonds as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurements. Business such as gold imports may also find this useful. IRDAI, insurance regulator, has given the framework for issue of surety bonds by insurance companies. AVGC Promotion Task Force. The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC Promotion Task Force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves
to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. They provide employment opportunities for our youth and make Indian industry more efficient and competitive. Supportive policies, light touch regulations, facilitative actions to build domestic capacities and promotion of research and development will guide the government's approach. For R&D in the sunrise opportunities, in addition to efforts of collaboration among academia, industry and public institutions, government contribution will be provided. Energy transition and climate change. The risks of climate change are the strongest negative externalities that affect India and other countries. As Honorable Prime Minister said at the COP26 summit in Glasgow last November, and I quote, "What is needed today is mindful and deliberate utilization instead of mindless, destructive consumption," unquote. The low-carbon development strategy, as enunciated in the Panchamrit that he announced is an important reflection of our government's strong commitment towards sustainable development. The strategy opens up huge employment opportunities and will take the country on a sustainable development path. This budget proposes several near-term and long-term actions accordingly. Solar power. To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentives, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. Honorable Speaker, sir, the circular economy transition is expected to help in productivity enhancement as well as creating large opportunities for new businesses and jobs. The action plan for 10 sectors such as electronic waste, end-of-life vehicles, used oil waste, toxic and hazardous industrial waste are already ready. The focus will now be on addressing important cross-cutting issues of infrastructure, reverse logistics, technology upgradation, and integration with informal sector. This will be supported by active public policies covering regulations, extended producers' responsibilities, framework, and innovation facilities. 5 to 7% biomass pellets will be co-fired
in thermal power plants, resulting in carbon dioxide savings of 38 MMT annually. This will also provide extra income to farmers and job opportunities to locals and help avoid stubble burning in agricultural fields. Saving energy is an important aspect of the energy management. Hence, energy efficiency and savings measures will be promoted. This will be done in large commercial buildings through the energy service company business model. It will facilitate capacity building and awareness for energy audits, performance contracts, and common measurement of and verification protocol. 4 pilot projects for coal gasification and conversion of coal into chemicals required for the industry will be set up to evolve technical and financial viability. The policies and required legislative changes to promote agroforestry and private forestry will be brought in. In addition, financial support will be provided to farmers belonging to scheduled castes and scheduled tribes who want to take up agroforestry. Honourable Speaker, I now move to the 4th priority, financing of investments. Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the Union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure, with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. GIFT IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics
free from domestic regulations except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. Infrastructure status. Data centers and energy storage systems, including dense charging infrastructure and grid-scale battery systems, will be included in the harmonized list of infrastructure. This will facilitate credit availability for digital infrastructure and clean energy storage. Venture capital and private equity invested more than 5.5 lakh crores last year, facilitating one of the largest startup growth system. Scaling up this investment requires a holistic examination of regulatory and other frictions. An expert committee will be set up to examine and suggest appropriate measures. Government-backed funds, NIIF and SIDBI, Fund of Funds, have provided scale capital, creating a multiplier effect. For encouraging important sunrise sectors such as climate action, deep tech, digital economy, pharma, and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance, with the government share being limited to 20% and the funds being managed by private fund managers. For financing the infrastructure needs, the stepping up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale. Measures will be taken to enhance financial viability of projects, including PPP, with technical and knowledge assistance from multilateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation. Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Financial assistance to states for capital investment. Reflecting the true spirit of cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing their capital investment towards creating productive assets and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the states. In deference to the requests received during my meeting with the chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. For 22-23, I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honourable members. In deference to the requests received during my meeting with chief ministers and state finance ministers,
The outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in catalyzing the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed to the states, are over and above the normal borrowings to the states. This allocation will be used for PM Gati Shakti related and other productive capital investments of the states. It will also include components for supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the state's share, digitization of the economy, including digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable development rights. In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. This includes an amount of 51,971 crores towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to Part B of my speech. Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for Yoga Kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with Dharma, along with collecting taxes which are in consonance with Dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya,
Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honorable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment,
to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Incentives for startups. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is, up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. Taking forward our policy of sound litigation management, I propose to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty,
and interest on account of lease of ship and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc., are liable to maximum surcharge of 15%, while other long-term capital gains are subjected to a graded surcharge which goes up to 37%. I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising on transfer of any type of assets at 15%. This step will give a boost to startup community, and along with my proposal on the extended tax benefits to manufacturing companies and startups, reaffirms our commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health and education cess as business expenditure. The income tax is not an allowable expenditure for computation of business income. This includes tax as well as surcharges. The health and education cess is imposed as an additional surcharge on the taxpayer for funding specific government welfare programs. However, some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that any surcharge or cess on income and profits is not allowable as business expenditure. Deterrence against tax evasion. Honourable Speaker, sir, presently there is ambiguity regarding set-off of brought forward loss against undisclosed income detected in search operations. It has been observed that in many cases where undisclosed income or suppression of sales, etc., is detected, payment of tax is avoided by setting off of losses. In order to bring certainty and to increase deterrence among tax evaders, I propose to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operations. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefits to their agents. Such benefits are taxable in the hands of the agents. In order to track such transactions, I propose to provide for tax deduction by the person giving benefits if the aggregate value of such benefits exceeds 20,000 rupees during the financial year. A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and the oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that has fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining, and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement
has engendered better compliance. GST revenues are buoyant despite the pandemic. I would bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honourable House. I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections for the month of January 22 are rupees 1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID, recovery post-COVID, as well as various policy and administration undertaken by central and state tax administrations. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes, but enthusiastically contributed to the cost of paying taxes. Special economic zones. In part A of my speech, I have referred to the proposed reforms in SEZs. Alongside, we will also undertake reforms in customs administration of SEZs, and it shall henceforth be fully IT-driven and function on the Customs National Portal with a focus on higher facilitation and with only risk-based checks. This will ease doing business by SEZ units considerably. This reform shall be implemented by 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. Customs administration has reinvented itself over the years through liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 pandemic, customs formation have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Customs reforms have played a very vital role in domestic capacity creation, providing level playing field to our MSMEs, easing the raw material supply side constraints, enhancing ease of doing business, and being an enabler to other policy initiatives such as PLI and phased manufacturing plans. My proposal on customs side are aligned to these objectives. Project imports and capital goods. National Capital Goods Policy 2016 aims at doubling the production of capital goods by 2025. This would create an employment opportunities and result in increased economic activity. However, several duty exemptions, even extending to over 3 decades, in some cases have been granted to capital goods for various sectors like power, fertilizer, textiles, leather footwear, food processing, and fertilizers. These exemptions have hindered the growth of the domestic capital goods sector. Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honourable Speaker, sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being introduced on inputs like specialized castings, ball screw, and linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation, including by crowdsourcing,
as a result of these consultations, more than 350 exemption entries are proposed to be gradually phased out. These include exemptions on certain agricultural produce, chemicals, fabrics, medical devices and drugs, and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure, several concessional rates are being incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. Removal of exemption on items which are or can be manufactured in India, and providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products will go many a step forward in achieving our objective of Make in India and Atmanirbhar Bharat. I shall now take up specific sector-specific proposals. Electronics. Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic smart meters. Duty concessions are being given to parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items. Gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year to disincentivize import of undervalued imitation jewelry. The customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. MSMEs. Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. Honourable Speaker, sir, duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of Rs 2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates.
Customs, Tariff and Customs Law, the details of which are there in the Finance Bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Vitt Videk 2020, Nirmala Sitharaman ji. Sir, item number 3, Finance Bill. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2022. प्रश्न ये कि वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो बजट है वो अब संसद के पटल पर रखा जा चुका है और कितना बड़ा ये बजट है हम आपको बताएंगे। करीब 40 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे देश के विकास पर और कहां फोकस है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो बजट है नए भारत की नींव रखता है। जिस तरह से वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो अमृत काल चल रहा है, 75 साल आजादी के हो चुके हैं और अब हम 75 से 100 साल का ये जो 25 साल का सफर है उसकी एक नींव रखता हुआ ये जो बजट है वो किस तरह से बुनियादी ढांचे पर फोकस करता है। आगे जाते हुए जो कोरोना की चुनौतियां हैं, क्या उससे निपटने में ये जो बजट है वो कुछ बड़े फायदे पहुंचाता है देश को, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey Recording in progress. वो बहुत अच्छे सुझाव हैं। क्लाइमेट चेंज में और भी बहुत सी चीजें, लो कार्बन कंजम्पशन, सोलर पावर के लिए
पीएलआई बहुत एक अच्छा, अभी तक पीएलआई की स्कीम्स ज्यादातर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, पर इस बार मुझे लगता है कि ये सोलर पावर में इसको 19,500 करोड़ रुपया देकर एक क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक बहुत यूनिक और अच्छा प्रयत्न सरकार करने जा रही है। पर जो इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड इसमें यह है कि जब हालांकि उन्होंने वर्चुअल और डिजिटल एसेट को टैक्स किया है, पर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अल्टीमेटली इसका इनडायरेक्टली कहना ये हुआ कि नाउ दे आर एसेट, जबकि ऐसा लगता है कि जो कुछ डिजिटल करेंसीज थी सच एज, अगर हम बिटकॉइन और ऐसी एक दो करेंसीज की बात करें जिनके पीछे कौन है उसका ही पता नहीं, उसको एक डिजिटल एसेट की तरह एक्सेप्ट करना ही इटसेल्फ में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहा। उसको कुछ करेंसीज, क्योंकि जब आप डिजिटल करेंसी की कैटेगरी देखते हैं उसमें 2-3 तरह की करेंसीज होती हैं, जहां पर उनके ओनर का पता है वहां पर तो ये ठीक है, जहां उनका ओनर का पता नहीं है वो मेरे हिसाब से बैन होनी चाहिए थी। ये एक छोटा सा पॉइंट मुझे इसमें नजर आया। और डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छा सुझाव कि बहुत अच्छा प्रोविजन जो लाने जा रहे हैं, कि आप अगले 2 साल में अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, तो तब तक नेचुरली जब तक टाइम होगा 2 साल का तब तक उस पर कोई वहां पर कोई एक्शन नहीं होगा। टैक्स इवेजन में जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अनडिस्क्लोज इनकम से सेट ऑफ नहीं होंगे, वो भी एक अच्छा सुझाव मुझे, एक अच्छा यहाँ का प्रोविजन मुझे नजर आया। और आई थिंक अभी मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये कुछ मुझे बड़े इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स इस बजट में नजर आए और मेरे हिसाब से ओवरऑल बजट बहुत बैलेंस्ड और एक बहुत बहुत ही जो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट सामने रखा गया है। धन्यवाद। चलिए अनिल जी, धन्यवाद। आई थिंक सो द गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड अ लॉट ऑफ एयर ऑन डिजिटल एसेट्स। जो बात थी कि रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे, बैन करेंगे, एटलीस्ट नाउ विद द स्कीम ऑफ इनकम टैक्स दे हैव एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कि डिजिटल एसेट्स आर हियर एंड दे आर हियर टू एग्जिस्ट, and obviously they made some changes accordingly, and anyways, Anil Gupta ji is here, so let's have Anil Gupta ji's bird eye view on the budget. क्या expectations थी और क्या रहा है? अनिल जी। 2-3 एक्सपेक्टेशन थी, उस पर बिल्कुल खरा उतरे हैं। कैपेक्स के अंदर कमाल का इन्होंने इंक्रीज किया है। कैपेक्स बजट के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का इंक्रीज है, 5.54 से 5.54 टू 7.50, और जो 2.9% ऑफ जीडीपी है। जो हम एक बात कह रहे थे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी, तो उसकी इंटेंशन गवर्नमेंट की इससे क्लियर नजर आती है। और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग इस बजट के अंदर बात है कि सेक्टर वाइज बात की है पूरे बजट के अंदर, और जो कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, इसको इन्होंने चेंज करके 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कर दिया। तो ये कंट्री के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस का साइन है कि जो छोटे छोटे टाउन्स के अंदर हमारे एमएसएमई और माइक्रो इंडस्ट्रीज वाले बैठे हैं, उनके यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट तक कन्फाइन थे, अब वो 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन पे आ जाएगा। अच्छी इससे माइक्रो को ग्रोथ मिलेगी, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। वंदे मातरम ट्रेन जो है 3 साल में 400 चलाएंगे। इस सरकार की इंटेंशन देखिए ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा ये एक स्टेप है। फिर ये अभी पिछले 2-3 साल जो है सरकार ने वो एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर लगाए। इस बार जो है 100 कार्गो टर्मिनल्स, इसके ऊपर सरकार का जो ये स्टेप है, ये रेलवे, कार्गो एंड जो ये रोड्स की बात कही उन्होंने, तो रोड्स में 20,000 किलोमीटर्स की नेक्स्ट ईयर के अंदर रोड्स बनने जा रही हैं।
आप एक बार सोच के देखिए कि कंट्री के अंदर मूवमेंट ऑफ द गुड्स के लिए कितना बड़ा एक जाल बिछ जाएगा। ये अपने आप में बहुत अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए। और इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कैपेक्स के साथ जोड़ दिया जाए तो गवर्नमेंट की इंटेंशन समझ आती है कि केवल अनाउंसमेंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, वो कुछ करके भी दिखाना चाह रही है। ये पर्वतमाला के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है कि रोड्स बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, तो उन्होंने नेशनल रोपवे और पीपीपी के थ्रू इसको अच्छा स्पर्ट दिया है। ये भी गवर्नमेंट की इंटेंशंस को शो करता है। मैं नाम नहीं लिख पाया हूं लेकिन 5 प्रोजेक्ट्स दिए हैं रिवर लिंक्स के। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी एक निशानी है इस बात की, जो फ्लड्स आती हैं, वाटर वेस्ट होता है, इरिगेशन में यूज नहीं हो पाता है, तो रिवर लिंक्स के अंदर ये अच्छा बेनिफिट देने वाला है। रूरल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिजिटल टीचर का कंसेप्ट दिया इन्होंने कि डिजिटल टीचर टूल लेके आएंगे, ये ई एजुकेशन को कहां तक ले जाना चाहती है सरकार। तो उन्होंने 200 टीवी चैनल्स अंडर द पीएम ई विद्या प्रोजेक्ट, तो ये फिर से रूरल डेवलपमेंट के लिए इस कंट्री की जो हमारी बेसिक बैकबोन है रूरल इकोनॉमी एंड द रूरल पॉपुलेशन, उसके लिए ये सरकार जो है कितनी कमिटेड है। हर घर नल से जल, इसके अंदर जो है पिछले साल जो है लास्ट 2 इयर्स में 8.7 करोड़ घरों को जोड़ा गया है, रफली 9 करोड़। और इस बार जो इन्होंने 22-23 का टारगेट दिया है, स्पीकिंग टारगेट है सरकार के पास, और आप इस सरकार को पकड़ सकते हैं कि उनकी बजट पे बोला उसने 3.8 CR हाउस होल्ड्स को हर घर को नल से जोड़ेंगे, और मियरली नंबर अनाउंस नहीं किया है, 60,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। एक और मुझे जो बहुत अच्छा लगा इनका, आप सब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस टू बैंक्स, ये अपने आप में बहुत अच्छा एक स्टेप है। और बैंकिंग जो है वो किस तरह नीचे तक परकोलेट हो जाएगी, ये सिंसियरिटी शो करती है सरकार की। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ईवी व्हीकल के लिए क्या पॉलिसी है इसको समझेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही थी। कल मेरी सुशील जी से भी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने फोन करके कहा था कि बैटरी इंडस्ट्री जो है ये, और कितनी जल्दी चार्जिंग कर पाएंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो मैं समझता हूं कि इसके थ्रू कुछ ना कुछ इस पे क्लैरिटी आएगी। एक इंटरेस्टिंग चेंज जो आया है, गवर्नमेंट गारंटीज को, जो जहां जहां पर प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट गारंटी चाहिए होगी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उसको सब्स्टिट्यूट किया है श्योरिटी बॉन्ड के साथ। और श्योरिटी बॉन्ड कौन देगा वो भी उन्होंने वहां डिक्लेयर किया है। तो ये भी क्लचेस से बाहर निकलने वाला काम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर एक अच्छा स्टेप है। फाइबर नेट ये पूरे रूरल बेल्ट के अंदर देंगे और पीपीपी मॉडल के थ्रू आएगा, तो इंटरनेट का जो पर्कोलेशन है वो किस एक्सटेंट तक इस कंट्री के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। पूरा सार जिस इकोनॉमी की ओर देख रहा है, जो इन्होंने नेक्स्ट ईयर का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट दिया है, तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं ये इसकी ओर इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक progressive budget and this will in the economy in the next financial year. धन्यवाद जी। रोहित जी, रोहित वासवानी जी, past president BPSS। रोहित जी, और expert comments, bird's eye view on the। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और इस बजट के लिए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरे को याद है जब हम सीए कर रहे थे और बजट सुनने के लिए हमें कहा जाता था, तो बजट सुनते हुए केवल ये लगता था कि ये तो केवल कागज है, सुनना होता है, दिखता कुछ नहीं है। और अब आप एक बात जरूर एनालाइज करेंगे कि अब बजट जो सुनने को मिलता है वो दिखता भी है, और ये हमने सालों से देखा है। और इस बार यदि आप इस बजट को ध्यान से देखें तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाओं के बजाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अपनी फाइन ट्यूनिंग है, जिसे कहना चाहिए छोटे छोटे जो कमियां हैं, प्लग इन्स हैं, उनको दूर करने पे ध्यान दिया है। और एक और बात, जो इम्प्लीमेंटेशन है, छोटी छोटी चीजें जो अटकती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे फास्ट हो उस पे जो है ध्यान दिया है उन्होंने।
और इस बात को कहने की जरूरत नहीं है कि ये अपने आप में डिजिटल बजट है, ये पेपरलेस बजट है। पढ़ा भी इसको टैबलेट से गया है, कागज से नहीं पढ़ा गया। और यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरा ई एजुकेशन, डिजिटल करेंसी और सारी डिजिटल से रिलेटेड इसमें चर्चा और बातें की गई है। और उसके अलावा जहां तक ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, ये बजट उस ओर पूरा पूरा इशारा करता है कि जो हमारा भारतीय पुरातन कंसेप्ट है, जो एक हमारी संस्कृति है कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उद्दोहन केवल उतना किया जाए जितना मिनिमम है। उन्होंने उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के कोट को भी रेफर किया, और जिसको उन्होंने रेफर करके कहा कि कंजम्पशन उतना होना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है और जो प्रकृति के लिए अच्छा है, न कि केवल कंजम्पशन से जिससे कि प्रकृति को नुकसान पहुंचे। उस तरह का उपभोग करने की इस सरकार की कोई मंशा इसमें लगती नहीं है। और एक बड़ा, जब हम छोटे होते थे तो हम सुनते थे कि घाटे की अर्थव्यवस्था, और देखिए इस कोविड ने आज हमें कंपेल कर दिया, हम वापस से घाटे की अर्थव्यवस्था हैं। अब ये अच्छे के लिए है या नहीं है ये तो समय बताएगा, लेकिन पिछले 3 सालों में हम वापस से उस इरा में पहुंच गए हैं जो घाटे की अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते थे। 6.4% का जो बजटरी एस्टिमेट है 22-23 के लिए फिस्कल डेफिसिट का, वो अपने आप में घाटे की अर्थव्यवस्था की ओर हमें ले जा रहा है। और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट हैं 21-22 के, वो 6.9% हैं। तो यानी 4% से नीचे जाना अभी बहुत लंबी यात्रा है। और जो अनिल जी ने एक बात कही, मैं उसको इससे जोड़ दे रहा हूं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कुल मिला के कैपिटल एक्सपेंडिचर और घाटे की अर्थव्यवस्था, ये आगे का अगले 3-4 सालों का और जो है विजन मुझे दिखता है। और इस बजट में लेकर के डिजिटल करेंसी की जो बात है, ये एक स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जिसे कहना चाहिए एक अच्छा प्रयास है। कितना इसमें सरकार सफल हो पाएगी और किस तरह की टेक्नोलॉजी ये लेके आएंगे, यानी कि हम केवल जो इंटरनेशनल हो रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। हमें अपनी करेंसी को डिजिटल करना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल करना होगा, डिजिटल रुपये की उन्होंने बात करी है। तो ये जो एक स्टेप है गवर्नमेंट का, ये बहुत आगे की तरफ गवर्नमेंट का स्टेप है, जिसे कहना चाहिए कि आगे के 10 साल 15 साल को देख करके गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप उठाया है। और जहां तक इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस पे काफी अच्छे प्रपोजल आए हैं, और हो सकता है कि फाइनेंस बिल की जब हम फाइन ट्यूनिंग पढ़ें तो उसमें और ज्यादा प्रपोजल देखने को मिले। जीएसटी के ऊपर उन्होंने उसको सारे, जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तब से वो जो उसकी मुख्य बातें हैं उसको रिपीट किया है कि जीएसटी एक लैंडमार्क रिफॉर्म है। वन नेशन वन टैक्स की बात जीएसटी में है। जीएसटी को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको लेकर के गवर्नमेंट सीरियस है, सिंसियर है। और जीएसटी को लेकर के उन्होंने एक डेटा भी प्रेजेंट किया। जनवरी मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन है वो हिस्टोरिक कलेक्शन एक जीएसटी का निकल के आया है कि जब से इम्प्लीमेंट हुआ है जीएसटी तब से अब तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन जीएसटी का उन्होंने इस बात को कहा है। तो इसके लिए सरकार को शुभकामनाएं, सभी को जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन जीएसटी में हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, इस बात को भी सरकार को समझना होगा। जो मशीनरी है उस मशीनरी में डायरेक्ट टैक्स में जिस तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं उस तरह के रिफॉर्म्स की आवश्यकता इनडायरेक्ट टैक्स में भी है। उसका चैलेंज केवल ये है कि यहाँ पे सारे स्टेट्स भी स्टेक होल्डर हैं, तो जीएसटी काउंसिल को सब सारे स्टेट्स को, जिसे फेडरल कोऑपरेटिज्म कहा जा रहा है जीएसटी को, उसको एक स्टेप और आगे ले जाने की जरूरत मुझे दिखाई देती है। बस यही कुछ इनिशियल रिमार्क मेरी तरफ से थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहित जी। Before we proceed, विपिन जी wants to chip in a word about the budget. विपिन जी। आई थिंक मेरे को तो सबसे बढ़िया इसमें एक बात लगी कि जो इंडिया है अब डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, और जो ये प्रोसेस है डिजिटाइजेशन का, आई थिंक इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन आवर सिस्टम एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड गिव ए बिग बूस्ट टू द इकोनॉमी. So this is what I want to say. I think this is the biggest takeaway whatever I feel. धन्यवाद विपिन जी। सुशील गुप्ता जी बैठे हैं हमारे साथ। सुशील जी नमस्कार। मुझे अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था जब बजट हम सब लोग देख रहे थे कि कल तक जो बातचीत थी, ऐसा लग रहा था कि जिससे भी बात करूं कि ये चूंकि हमारे यहाँ एक सॉर्ट ऑफ मिनी इलेक्शन चल रहा है, अगर हम पूरे कैलेंडर ईयर 2022 को देखें तो ये जो बजट होगा ये पॉपुलिस्ट होगा,
किसान आंदोलन को ध्यान में रख के होगा और इलेक्शंस को ध्यान में रख के वगैरह वगैरह होगा। तो लेकिन ये साफ हो गया गवर्नमेंट की सारी इस बजट से कि ये पॉलिसी बजट है, इसकी इंपॉर्टेंस है, ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। और जनरली क्या रहता है कि हम आज तक, जैसा रोहित जी ने बताया, आज तक देखते थे तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स ध्यान में आता था कि बजट का मतलब कि टैक्स रेट्स में क्या चेंजेस हुए हैं, मेरे लिए क्या बेनिफिट है। लेकिन आम आदमी उस मेरे लिए बेनिफिट से देश के लिए क्या बेनिफिट है और उसमें मेरा क्या बेनिफिट है, इसके ऊपर चला गया। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है, बड़ी ही पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो इससे आई हैं, और उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होंगे इसके बारे में हमसे विचार करने लगे। जैसे कि इसमें जो सबसे बड़ी बात एक मुझे दिखी कि मैं एक बार किसी से बात कर रहा था कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी देश की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों है, तो उसने मुझे एक लाइन में जवाब दिया कि वहां के रोड्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा उसने बोला। तो कुल मिलाकर के जो ये गति शक्ति की बात की है, जो 7 इंजन्स की बात की है, जो ये चाहे वो पोर्ट्स हैं, फिर मेरे रोड्स हैं, चाहे रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, कुल मिलाकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि इंटेंशन को अगर हम देखें तो 25,000 किलोमीटर की एक साल की बात की गई। कहां हमारे यहाँ 3 किलोमीटर की रोड्स पर डे बनती थी, अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था तो करीब 69 किलोमीटर पर डे की स्पीड बनती है। कल्पना करें 3 किलोमीटर से 69 किलोमीटर पे जाना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से बढ़कर के वन स्टेशन वाली बात आ गई, 100 कार्गो वगैरह की बात आ गई। रिवर लिंकिंग की कब से, जो 2002-3 से हम इस बात को सुनते थे और हम हर बार देखते थे कि फ्लड आना भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो आज बात आ गई उसमें भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, एमएसएमई में जो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का जो एक्सटेंशन है उसका बढ़ना एक बड़ा एक अच्छा स्टेप है। इसी तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग, और जो ये बात इसमें आ रही थी कि जो अपना रियल एस्टेट सेक्टर है ये सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयर है, तो उसमें भी जो गवर्नमेंट ने जो बूस्ट दिया है, इट इज रियली वेलकम। और चाहे वो ई पासपोर्ट है या डिजिटल करेंसी या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, तो इट इज रियली गुड। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूँ सरकार को और एक पूरे देश को। कुल मिलाकर के जरूरी नहीं है कि एक, जो पहले हम कहते थे कि भारत के बारे में जो पॉलिसी है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के या किसी अमेरिका की किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में बैठ करके वहां पर बनती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम जो एक डेफिसिट बजट है उसमें से भी हम तरक्की का रास्ता ढूंढ सकते हैं, सरकार ने बताया। थैंक यू। धन्यवाद सुशील जी। राज जी, मैं देख रहा हूँ राज जी इज देयर नाउ, वेट कर रहे हैं राज जी, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर व्यूज। यस, काफी बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। डायरेक्ट टैक्स में दो बातें जो मैं स्पेशल एम्फेसिस देना चाहूंगा कि एक बात उन्होंने कही है कि डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं करेगा अगर आपका प्रीवियस ईयर का मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना लिटिगेशन होता था कि अगर एक साल में किसी एसएससी में एडिशन हो गई तो असेसिंग ऑफिसर उसको 10 साल तक करता रहता था, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उसका डिसीजन आने में 10 साल और उससे भी ऊपर लग जाते हैं। तो हर साल उसकी ओपनिंग या उसको स्क्रूटनी में लेके और उस पर एडिशन होती रहती थी। भाई डिपार्टमेंट तो अभी लिटिगेशन में है, चाहे ट्रिब्यूनल से डिपार्टमेंट हार गया है, सीआईटी अपील से हार गया है, हाई कोर्ट में है, फिर भी वो उसको एडिशन करते रहते थे। वो कहते थे कि हमने वहां स्टैंड लिया हुआ है इसलिए हम एडिशन को रिपीट करते रहेंगे। तो अब उन्होंने कह दिया कि अगर किसी भी इशू पर पिछले सालों में डिपार्टमेंट अगर अपील में है, इस ग्राउंड के ऊपर हम आगे अपील डिपार्टमेंट नहीं करेगा। बहुत ज्यादा लिटिगेशन जो एसएससी को होता था और आगे के सालों में एडिशन होती रहती थी, वो इससे रुक जाएगी। एक बहुत ही वेलकम स्टेप है और लिटिगेशन को कम करने में और एसएससी की जो हरासमेंट होती थी उसको कम करने में काफी हेल्प करेगा। सेकेंडली, ये जो अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट लाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब एआईएस लेके आए हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ला रहे हैं उसमें आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, डीलिंग्स हैं, वो सब कैप्चर हो रहे हैं। धीरे धीरे होंगे और वो अपडेट होता रहता है। तो मे बी विद इन ए ईयर, विद इन नेक्स्ट 2 years आपके ट्रांजेक्शन्स अपडेट होते हैं। बेस्ड अपॉन दैट इफ इट इज फेल्ट कि मैंने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं किया है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि परपेचुअल डिक्लेरेशन स्कीम उन्होंने दी कि आपको अगर चाहते हैं कि अपनी रिटर्न को रिवाइज करके टैक्स पे कर दें और कुछ एडिशनल टैक्स और उस पर एप्लीकेबल होगा वो पे कर दें, तो सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से 148 का नोटिस आए उससे पहले आप स्वयं ही रिटर्न को अपडेटेड करके फाइल कर दें। तो हो सकता है कि पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन वगैरह उन सबसे वेवर दे रखा होगा
और 30% या जो भी एप्लीकेबल टैक्स है उसके अलावा हो सकता है उस पर फर्दर 50% ऑफ दैट टैक्स उन्होंने और मांग लिया हो। अभी वो वी हैव टू सी कि क्या उन्होंने एडिशनल टैक्स की डिमांड किया। बट अगेन दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड स्कीम कि जहां एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट हो और इंस्टीट्यूट की एक बार, क्योंकि इस समय रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम बहुत कम है, बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ही फाइल करना है। अब उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मतलब दिस इज आल्सो ए वेरी वेरी गुड स्कीम। कॉर्पोरेट टैक्स को 15% वाली जो स्कीम थी वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है। अगेन दिस इज ए वेलकम स्टेप। इसके अलावा कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं किए हैं डायरेक्ट टैक्स फ्रंट पर। लेकिन जहां तक इकोनॉमी के फ्रंट की बात है, काफी बातें कह दी गई हैं। 2 बातों पे मैं एम्फेसिस दूंगा कि एक तो उन्होंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम न्यू फेज टू बी लॉन्च्ड, कि उसका न्यू पॉलिसी, न्यू फेज ऑफ द पॉलिसी लॉन्च करेंगे। इसका मतलब देयर इज एक्स्ट्रा एम्फेसिस कि कैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए ऑल टुगेदर एक नई पॉलिसी, नई दिशा, नया एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और डिजिटाइजेशन तो उन्होंने कहा ही है कि हर चीज को अगर आप आईटी बेस्ड कर देंगे, हर चीज को आप सिस्टम बेस्ड करेंगे तो उससे ईज आना स्वाभाविक है। और सेकेंडली एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी न्यू पॉलिसी अनाउंस होगी, क्योंकि पहली वाली जो पॉलिसी थी वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और इकोनॉमी की बड़ी ग्रोथ के लिए जो हम मॉडल देखते हैं कि जब तक स्केल नहीं होगा तब तक हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नहीं हो पाते हैं। और स्केल के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज द नीड। चाइना में, यूएस में हम सुनते हैं कि पूरे पूरे सिटी के सिटी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। तो उस टाइप के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल मोबिलिटी जोन, सोलर पावर जोन, कॉर्पोरेट पार्क, ये सब बातें उन्होंने कही हैं जो कि हम इस साल में लॉन्च करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ऐसा मुझे लगता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो, डेवलपमेंट के ऊपर तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एम्फेसिस है। आप देखो रोड 25,000 किलोमीटर 1 साल का टारगेट है, 70 किलोमीटर पर डे, और जहां 2014 से पहले 7 किलोमीटर पर डे बनती थी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी चीज हो, जाए रोड हो, रेलवेज हो, टेलीकॉम हो, लॉजिस्टिक्स हो, एयर हो, एयरवेज हो, सभी के ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस है। तो आई थिंक दिस इज आई मीन वेरी वेरी गुड ग्रोथ बजट। रेट्स को टिंकर नहीं किया है, दैट इज अगेन गुड। लास्ट पॉइंट कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि फिजिकल डेफिसिट, आज से 3 साल पहले फिजिकल डेफिसिट का कितना रेस्ट्रिक्शन होता था, वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 3%, और हमारे ऊपर प्रेशर था ग्लोबल। और जब उनको प्रॉब्लम हुई और उन्होंने अपना फिजिकल डेफिसिट की लिमिट हटा दी, तब उनको समझ आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब उनको जरूरत हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलो नॉनदलेस वो चीज अब हमको भी फायदा करेगी। और अब फिजिकल डेफिसिट की जो एक इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से हमारी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती थी, वो चीज खत्म हो गई है। नाउ वी आर गोइंग एट ए फिजिकल डेफिसिट ऑफ 6.4%, मींस 40% of the total expenditure is by way of physical deficit. 60% is by way of revenue, approximately. So I think again this is a very good step, and for physical consolidation of our growth for a developing country, it is required. So these are my some comments. Thank you. जी साहब, IC GP मदान जी और कमेंट्स ऑन दी बजट। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है जो सुबह 10:30 से 11 बजे तक हमने डिस्कशन किया, काफी कुछ चीजें फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच गई हैं और उन्होंने अपनी बजट स्पीच में काफी कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया है। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा राज जी को कि राज जी ने उस चीज का फेवर किया है, रादर एप्रिशिएट किया है फाइनेंस मिनिस्टर की प्रपोजल को, दैट इफ सम लॉ इश्यूज पेंडिंग बिफोर एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, then other proceedings will be kept in abeyance, though it goes against the law firm of Raji, but still he has favored it, and that is called true professionalism. Now I will say this budget being a growth oriented, expenditure oriented, development oriented, and जैसा अनिल जी ने कहा कि पहली बार, अनिल गुप्ता जी ने बोला कि पहली बार हमने देखा कि सेक्टर वाइज प्रपोजल्स आई हैं, सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स इसमें आई हैं। बजट से पहले भी अगर सुबह मुझे मौका मिलता तो मैं भी यही कहता कि आई एम नॉट मोर कंसर्न्ड अबाउट द टैक्सेस। अगर आप खर्चा करेंगे, जीडीपी अच्छा होगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो पीपल विल नॉट शाई अबाउट पेइंग द टैक्सेस।
नवल जी ने सुबह बोला कि हमारा सामान पहुंचने में बहुत देर लगती है, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लग जाते हैं। आई थिंक वो भी उन्होंने सुन लिया, इसलिए उन्होंने बजट में काफी कुछ एलोकेट किया है ऑन रेल, रोड एंड एयरपोर्ट फैसिलिटीज। SEZ टू बी रिप्लेस्ड। SEZ अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि SEZ इज ए फेलियर मॉडल और SEZ इज ए सक्सेसफुल मॉडल। I think all this feedback has reached the government and government has decided to replace this entire legislation. It is very, very welcome step. One nation, one registration, again, one of the finest initiatives by the government. GST के ऊपर रोहित जी एक्सपर्ट हैं। हम सुबह आज अखबार पढ़ रहे थे तो हमने सबने देखा 1.38 लाख करोड़ की फिगर आई हुई थी, लेकिन जब तक मैडम फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट पहुंची फिगर भी बढ़ गई 3 लाख करोड़ से, और ये 1,41,000 करोड़ होगी, तो 3,000 करोड़ से फिगर भी बढ़ गई। एंड आई एम रियली हैप्पी टू नोट दैट दिस इज द हाईएस्ट एवर फिगर सिंस द इंसेप्शन ऑफ GST इन जुलाई 2017. Insolvency law, which is very close to my heart, 3 announcements have been made. Number one, that the resolution plan implementation is going to be very, very comfortable, an easy one. Lot of emphasis shall be placed on the implementation of the plans, क्योंकि अभी तक resolution plan approve हो जाते थे, implementation में बहुत दिक्कत आती थी। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के ऊपर प्रोविजंस लाने की बात हो रही है, एनेबलिंग प्रोविजंस है, लेकिन अभी तक फाइनल आउटलाइन उसकी नहीं आई थी। तो हम देख रहे हैं जैसे इंडिया के बहुत सी कंपनीज इंसॉल्वेंट हुई हैं, लेकिन उनके बाहर भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, एसेट्स हैं, तो अभी तक वो इंसॉल्वेंसी रिजीम में लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वॉलंटरी वाइंडिंग अप is going to be eased up. I think this is one of the welcome step by the government, because voluntary winding up is nothing but an art of exiting. जो आर्ट ऑफ एग्जिटिंग अभी तक मिसिंग थी, यहाँ पे अब एग्जिट करने के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू फैसिलिटेट दिस एग्जिट by virtue, by means of this voluntary winding up. And if we are at the today's newspapers, that there are a lot of questions on whether IBC is a failure or successful legislation. Just because IBC is there in operation, defaults होने कम हो गए हैं. The moment somebody becomes a defaulter, a notice is issued, the borrower immediately runs to the bank so that NCLT proceedings, IBC proceedings are not initiated. तो कोर्ट में क्या हो रहा है, दैट इज इमैटेरियल. आईबीसी लेजिस्लेशन होने से डिफॉल्ट्स कम हो रही है. दिस इज ए वेरी वेरी वेलकम स्टेप, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में एनपीएस बैंक्स की बहुत 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 कम होने वाली है. विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं होने वाले हैं. सर्कमस्टांस की वजह से कोई डिफॉल्टर हो जाता है तो बात अलग है, पर विलफुल डिफॉल्टर तो मेरे हिसाब से एक भूतकाल की चीज होने वाली है. एंड दो चीजों पे मेरा नॉट नेगेटिव बट माय ऑब्जर्वेशंस. वन इज आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कि शायद कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लायंसेस के ऊपर मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि कंप्लायंसेस कम हो गई हैं, सम लेजिस्लेशंस ऑब्सोलीट उन्होंने रिपील कर दी हैं. आई थिंक दोज लेजिस्लेशन वर आल्सो नॉट इन ऑपरेशन, दे वर नॉट इन प्रैक्टिस. कंप्लायंसेस के ऊपर अभी काफी कुछ करने की जरूरत है, पर जैसे जैसे इकोनॉमी डिजिटाइज होगी, सिस्टम डिजिटाइज होगा, मुझे लगता है अपने आप कंप्लायंसेस कम हो जाएंगी. रादर हमारी अपनी हैबिट ही बन जाएगी कंप्लायंसेस करने की, रादर सिस्टम अपने आप कंप्लायंसेस करा देगा, नॉन कंप्लायंसेस होनी बंद हो जाएंगी. इसके साथ ही मैं विराम दूंगा. धन्यवाद. थैंक यू मदान साहब. पुनीत अग्रवाल जी. पुनीत जी. थैंक यू. आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स कवर हुए. मैं 2-3 पॉइंट्स को थोड़ा टच करूंगा. एक तो जैसे जैसे हम लोगों की इकोनॉमी नई डायमेंशन में बढ़ रही है, तो फाइनेंशियल असेट्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है हमारे देश में. अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट आई थिंक 2017 या 18 में आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे लगभग 90% जो सेविंग्स एंड डोमेस्टिक, दैट इज इन फॉर्म ऑफ फिजिकल असेट्स. बट हम लोगों ने पिछले 1 साल 2 साल में देखा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उन लोगों ने अपने जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो डबल से भी ज्यादा कर दिए. यानी जितने पहले थे आज से 50-60 साल में, उतने पिछले 1-2 साल में उससे ज्यादा खुले. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रॉस एंड डोमेस्टिक सेविंग्स बहुत बढ़ रही है. तो इसके ऊपर आप लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट नोटिस किया होगा कि इन्होंने गिफ्ट सिटी के अंदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियल कोर्सेज और अपने एक्सपीरियंसेस करने को बोला है. वी आर ऑल अवेयर कि लंडन यूज्ड टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड नाउ सिंगापुर इज आल्सो eye to that, and Hong Kong also is a important. तो अगर उन लोगों का एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर मिलेगा तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सोच है.
और उसके साथ में एक साइमल्टेनियसली बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, हमने इस साल बीवीएसएस में उसके ऊपर काफी जोर शोर से उठाया भी था, वो आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए कंपनीज को भी सिंगापुर और लंदन भागना पड़ता है। दे आर नाउ कंटेम्पलेटिंग टू ब्रिंगिंग दैट सेंटर विद इन गुजरात। तो आई थिंक केम छो मजा मत छो, तो बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं। बट एक जो चीज मेरे को लगती है जहां पर इनको ध्यान देने की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? हिंदुस्तान के व्यापारी को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, इनफैक्ट उसका कहना ही है कि हमें लिए कुछ मत करो, हमें तंग मत करो। वो जो एक पॉइंट है वो कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं हो पा रहा, बिकॉज माइंडसेट जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का जो सिस्टम जिस तरीके से फंक्शन करता है, जो रोहित जी ने भी एक पॉइंट रेज करा कि जीएसटी की कलेक्शन हम 1,40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे जो अननेसेसरी का हम पेन दे रहे हैं वो वी आर नॉट एबल टू एड्रेस दैट। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि जीएसटी इज समथिंग व्हिच इज बीइंग टच्ड अपॉन, उसका जो टच पॉइंट है वो गवर्नमेंट का हर एक व्यापारी से है। इट इज नॉट जैसे पहले होता था कि एक्साइज ड्यूटी कुछ बड़े सेलेक्ट लोगों के साथ थी, जीएसटी ऐसी नहीं है, इसका टच हर एक पॉइंट व्यापारी के साथ है। तो ऐसे में कंप्यूटर के थ्रू उनके क्रेडिट्स को ब्लॉक करना, कंप्यूटर के थ्रू उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देना, नो नोटिस, नो हियरिंग, नो प्रोसीजर, ये सब चीजों को बहुत जल्दी एड्रेस करने की जरूरत है। उसके अलावा एक पॉइंट आया जो इन्होंने डायरेक्ट टैक्स के अंदर बोला कि हम अपील नहीं फाइल करेंगे, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड में देखता हूं, वो ये है कि अपील तो नहीं फाइल करेंगे, अगर 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और अपील फाइल नहीं करी तो क्या असेसिंग ऑफिसर 25 साल के बाद प्रोसीडिंग करेगा? ये अपने आप में बहुत डबल एज्ड स्वॉर्ड है। तो अगर इसको प्रॉपरली वर्ड नहीं किया गया तो इससे सर्टेनिटी की बजाय अनसर्टेनिटी, अभी तो अपील आपने फाइल करके पेंडिंग कर दी, आपको नेक्स्ट लेवल पे स्टे मिल जाएगा बिकॉज ऑलरेडी डिपार्टमेंट अपील में आप तो जीते हुए हैं। बट ये और भी खतरनाक है कि अपील फाइल नहीं है, 25 साल बाद अगले को पता चलेगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग था, आज हम आपके खिलाफ ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड ये कई स्टेट लॉज में ऐसा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान से वर्क करने की जरूरत है, इसको शायद हमें इस तरीके से भी इसको समझना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी सब पॉइंट्स रेज हुए, लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर रेज करना चाहूंगा। आई थिंक जिस तरीके से सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जोर दे रही है, मैं आई विल नॉट रिपीट इट, उसके बेसिस पे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, तो आई थिंक द नेक्स्ट 8 to 10 years are going to be golden years for Indian banking and NBFC sector। जो अच्छे लेंडर्स हैं, जो अच्छे बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर है, जो प्रूडेंस के साथ काम कर रहा है। और मलाम सर ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात रेज करी कि आज की डेट में एनपीएस नेक्स्ट कुछ सालों में एनपीएस होना सिर्फ जेन्युइन केसेस में, मैं उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बोल रहा हूं कि वो जहां जेन्युइन बिजनेस फेलियर होगा वहां एनपीए होने के चांस ज्यादा होंगे, नॉट बिकॉज ऑफ मालियाज एंड ऑल दोज करप्ट प्रैक्टिसेस। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन एरा ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस एंड इससे बहुत बड़ी एक सीख ली जा सकती है कि कैसे एचडीएफसी बैंक जैसे जो जिन्होंने अपने को सिस्टम से ड्राइव किया, मतलब पहले के जमाने में कोई जो लेंडर था वो क्या सोचता था कि लाला के गद्दी में बैठे बिना कैसे लेंडिंग होगी। एचडीएफसी बैंक ने दिखाया कि सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स से आप टफेस्ट ऑफ बिजनेसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो और आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सीख है ये सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमारे कंट्री में, और ये एक बजट इस दिशा में एक बहुत बढ़िया कदम हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू दे रहा है। थैंक यू जी। पुनीत जी एक डिस्क्लेमर दे दो, यू डोंट होल्ड एचडीएफसी बैंक शेयर्स। नवल जी कैन यू हियर मी? आपकी प्री बजट बातें तो सारी ये डिस्क्लेमर दे नहीं पाऊंगा सर मैं। Reliance Investor has recognized all your sayings, so let's have your bird's eye view on the budget. पहले तो बहुत बहुत मुबारक पूरी बीबीएसएस टीम को कि इतने अच्छे से पूरा कोऑर्डिनेट करके हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट का जो एक लॉन्ग टर्म का एक विजन है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही डिस्पाइट, जैसे अनिल गुप्ता जी ने भी कहा था कि ये इलेक्शन ईयर है, 7 से ज्यादा स्टेट्स आप इलेक्शन में जा रहे हो, उसके बाद भी अगर आप मीट कर पा रहे हो, आपका जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 6.8% का प्रोजेक्टेड, उसके अगेंस्ट इस साल निर्मला जी ने बताया है कि 6.9% रहेगा।
एंड 22-23 का टारगेट 6.4% है। उसके बाद भी अगर आप ये अनाउंसमेंट कर सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ के होंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद मैं आता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भारतीय वित्त सलाहकार समिति की तरफ से भी एक सजेशन गया था और काफी सारे हमारे सजेशंस माने भी गए हैं। एक सजेशन हमने ये दिया था कि जो भी आप नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है बजट अप्रूवल के बाद, और काफी सारा समय लगता है एक्चुअल में पैसा मार्केट में पहुंचने में। तो आप क्या करिए, आपके पास जो अभी करंटली आपके पास जो चीजें हैं आप उसमें फ्लो ऑफ मनी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आई थिंक सरकार ने उस पर फोकस किया है। और पेमेंट्स के ऊपर जो बोला गया कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो पेमेंट्स हैं उसमें 10 दिन की गारंटी 75% ऑफ द रनिंग बिल्स के ऊपर बात की गई, कंसिलिएशन फोरम की बात की गई, और ऑनलाइन ई बिल सिस्टम जो होगा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की जो प्रोक्योरमेंट है। ये छोटी छोटी चीजें सुनने में लग रही हैं लेकिन एक्चुअल में ये बहुत इफेक्टिव होती हैं जब हम कैश फ्लो इंक्रीज करने की बात करते हैं, जब हम स्पेंडिंग इंक्रीज की बात करते हैं। जो श्योरिटी बॉन्ड्स, अनिल गुप्ता जी ने भी ये पॉइंट टच किया था, बैंक गारंटी से देने से क्या होता है, बहुत सारे आपका फंड ब्लॉक हो जाता है। अब जब श्योरिटी बॉन्ड आएगा तो हालांकि उसका पूरा खाका देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत मददगार जो है वो स्टेप है। कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो गए तो उनके ऊपर नहीं बोलूंगा। एक जो अच्छा पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि हेल्थ ये जो ग्रीन क्लियरेंसेस हैं, ग्रीन क्लियरेंसेस आज की डेट में एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दा है और उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की बात की गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्योंकि इससे रिलेटेड जो कंप्लायंसेस हैं, देखा गया है कि कई बार सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 3 साल बाद 4 साल बाद ऑब्जेक्शन लगता है और पीपल हैव टू रिट्रैक्ट। तो ये अगर सिंगल विंडो सिस्टम में इजी हो जाएगा तो ये बहुत प्रोसीजर बेसिस पे ये काफी एक अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे लग रहा है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड देने की बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट्स को ओवर एंड अबव उनकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उस पर वो बोरो कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री। इससे भी स्टेट्स के लिए जो फंड्स हैं उसको जनरेट करने के लिए और उनको स्पेसिफिक जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताए जो टॉपिक्स, जैसे कि आपका ये गति शक्ति है, आपका सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रोडक्शन कैपिटल से रिलेटेड, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड, रिफॉर्म से रिलेटेड, इन सब मुद्दों के ऊपर स्टेट्स के लिए भी जो फंड्स होंगे तो वो काम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी कुछ बातें हैं। और रूरल कनेक्टिविटी के ऊपर जो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई वो भी एक बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म का स्टेप है। तो ओवरऑल बजट काफी बैलेंस्ड और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। कुछ बातों ने निराश भी किया है, मैं उस पर जरूर बोलना चाहूंगा। नंबर एक बात जो निराशा की है वो ये है कि जैसे इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो 5.8% का इन्फ्लेशन है। अगर हम होलसेल इन्फ्लेशन देखें तो वो आई थिंक 14.2% रहा है, बहुत मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट। तो उस केस में मिडिल क्लास के लिए क्या जीएसटी, जिसको गुड एंड सिंपल टैक्स बोला गया था, क्या उसके रेट्स में रिवीजन नहीं होने चाहिए थे? ये एक प्रश्न डिस्कशन का विषय हो सकता है। नंबर 2, जो एक डिमांड हमारी तरफ से गई थी जो आधी मानी गई है वो ये है कि हमने कहा था कॉर्पोरेट्स के लिए आपका जो टैक्सेशन है वो एक लेवल पे है और आपका एलएलपी और एओपी के लिए अलग है। तो एओपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एओपीज के लिए तो उन्होंने रैशनलाइज किया है, लेकिन एलएलपीज का टैक्स अभी भी कंपनी से ज्यादा है, तो लोग एलएलपी बनाएंगे क्यों? और दूसरी बात जो एचएनआईज है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उसके लिए कुछ नहीं हुआ, जबकि बात ऐसे बहुत सजेशंस काफी जगह से गए थे कि इस बार कम से कम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्ट करते हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी कुछ रिलीफ होना चाहिए। इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। और 2 सेक्टर और है जिनके ऊपर बात नहीं हुई। एक होम बायर्स से रिलेटेड आवास योजना और इन्वेस्टमेंट पे बात हुई, लेकिन जो स्टक प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान का करंट स्टेटस क्या है, आगे का विजन क्या है, वो शायद डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स में आएगा, लेकिन स्पीच में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो कार्बन ट्रेडिंग है वो एक, मैं बजट से पहले भी बोल रहा था, 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक की एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। तो उसके ऊपर जो उसका डिटेल्ड जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ेंगे उसको देख के फिर कमेंट किया जा सकता है, बट मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 2008 के बाद अब जाके हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म में चेंजेस ला रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू नवल जी। पार्टिसिपेंट्स में मैं देख रहा हूँ महेश बाबू गुप्ता जी है, क्या सुन पा रहे हैं? प्रवीण नागपाल जी हैं, वुड दे लाइक टू कंट्रीब्यूट टू दी
on the budget? Till the time, Mahesh ji. क्योंकि लैपटॉप पे बैठो पैसे वाले जो पर 8 से 10% लोग कर पा रहे हैं, वो हमारे साथ इकोनॉमी का साथ हमारे काम। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी महेश जी, आवाज आ रही है आपकी? मैं सुन, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। आप बोलें, ऑल आर हियरिंग। मेरे हिसाब से तो बजट बड़ा मिरेकिल वाला है। बहुत सारी चीजें जो हम कल्पनातीत हुआ करती थी, जैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बन सकती है। लेकिन गिफ्ट सिटी एक नया कंसेप्ट आ गया। ये बहुत सारी चीजें जो शुरू कर रहे हैं इस बजट से, जैसे डिजिटल करेंसी के रूप में रुपी डिजिटल करेंसी हो गया, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वास्तव में इसने बजट को बहुत ऊंचाइयों पर ले गया। ये बजट की जो एक्सरसाइज हम नॉर्मली सोचा करते थे कि बजट में थोड़ा टैक्स स्लैब कम होंगे, ज्यादा होंगे, कुछ कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उस एरिना से बजट को दूसरे एरिना में निर्मला सीतारमन जी ले गई हैं। हमारी सोचने की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला बजट है ये। Mahesh ji, as rightly said, हर participant का यही view है कि this is a different out of the blue budget. Being election यार सब सोच रहे थे election oriented budget होगा, but they had the guts and to do away with the myth of the people. Here anyway, Sandeep ji, we can have your views on the budget. Sandeep ji. थैंक यू संदीप जी जब तक बोल रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंचजन्या से कोई जो भी कनेक्टेड हैं ऑडियंसेस में से प्लीज मैसेज भेज दें। वी वुड लाइक टू हियर योर व्यूज आल्सो ऑन द बजट एंड देन वी विल टेक टू लाइव। और कोई इनके क्वेश्चंस हो तो वो क्वेश्चंस भी दे दें पंचजन्या से। संदीप जी कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। जैसा आप लोगों ने बोला, आई आल्सो बिलीव इट्स वेल बैलेंस्ड बजट, और जो अपने फ्यूचर की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ही अच्छा इन्होंने फोकस किया हुआ है। फ्यूचर की इकोनॉमी जो हम आए दिन सुनते आते थे, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में या डिजिटल और डिजिटल के बारे में, तो अगर ग्रीन इकोनॉमी में देखें तो इन्होंने ई वेस्ट उस पर इन्होंने अच्छा फोकस किया। उनकी कोई पॉलिसीज आएगी अलग से। पीएलआई स्कीम भी आ रही है सोलर वाले प्लांट पे। पीएलआई स्कीम जो कि बहुत ही एक देखने वाली बात रहेगी। पीएलआई स्कीम से जैसा आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट आई है, वेदर इट्स स्टील, वेदर इट्स टेक्सटाइल। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी आएगी, और साथ ही साथ इन्होंने पैसे के लिए उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, ग्रीन बॉन्ड का भी कुछ कर रखा है प्रोविजन, जो हम डिटेल्स में देखेंगे। फ्यूचर इकोनॉमी में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, इन्होंने एवीजीएस बनाया, एनिमेटेड वीडियो गेमिंग कमेटी। अगर आप देखेंगे कि आज का अगर एक नौजवान है या यंग हमारी पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ इंडिया जा रही है कि हमें क्या वीडियो गेमिंग सीखना है, वीडियो गेमिंग में एक्सपर्टाइज लेनी है, वो करने जा रही है, और एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका। अगर इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो हॉलीवुड की जो फिल्में बनती है, एनिमेटेड जो मूवीज बन के जाती है, तो मैक्सिमम जो एनिमेटेड मूवीज बनती है पटना में बनती है, तो वहां से फिर बन के जाती है, देन वो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज प्रोड्यूस होती है। तो हमारे यहाँ पे रहेगा तो दैट विल बी वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गिफ्ट सेक्टर का जो इन्होंने एरिया जो इंक्रीज कर दिया, आई एम वेरी मच हैप्पी कि कुछ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज भी वहां पे आएगी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी वहां पे होगा। और लॉन्ग पेंडिंग इशू जैसा आप लोगों ने बताया, हमने डिस्कस भी किया कि एससीजेड जो थी, एससीजेड रिफॉर्म वाज अवेटेड। एससीजेड जो मैंने काम किया है एससीजेड में, व्हाट आई बिलीव कि एससीजेड वाज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट और बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी उसमें, बट कहीं ना कहीं बीच में वेदर इट्स पॉलिसी इशू और कुछ और इशू, अदर इश्यूज हो गए, उसके कारण वो पैरालाइज हो गया था, मतलब उसमें कुछ ग्रोथ आ नहीं रही थी। बट यस, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब नई पॉलिसीज क्या आ रही है, नया एक्ट या कोई उसको क्या रिप्लेस करेंगे और उसको हम आगे कैसे ले जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू संदीप जी। पंचजन्या से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई क्वेश्चन हो या एनीबॉडी वुड लाइक टू गिव द बिrd's eye view on the budget।
मनु जी, जब तक कोई पांचजन्या से ज्वाइन करें, एक केवल अपडेट जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि कुछ भी स्पीच में नहीं कहा गया, लेकिन फाइनेंस बिल में काफी सारे अमेंडमेंट हैं और वो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जहां तक रेस्ट्रिक्शंस की बात है, फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम जो रिटर्न का था उसको अब उन्होंने डिस्पेंस विद कर दिया है। अब मैचिंग, इनवॉइस लेवल मैचिंग टू वे नहीं होगी, जो कि इनिशियली कंसेप्ट होता था जीएसटीआर 123 का, और उसी के पैरेलल बहुत सारे अमेंडमेंट भी हैं। तो सेक्शन 16(2) जो कि एलिजिबिलिटी के लिए एक कंडीशंस प्रेस्क्राइब करता था, उसमें एक और कंडीशन नई B1 क्लॉज करके वो जोड़ रहे हैं। तो एक जो इनिशियल स्टार्टिंग जीएसटी की जो हुई थी इनवॉइस लेवल मैचिंग की, उसका फ्रेमवर्क अब सारा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और रेस्ट्रिक्शंस के लिए उन्होंने इसमें कई सारे प्रोविजंस को प्रोवाइड किया है। एक रिलैक्सेशन जरूर दिया है, जो हमारी डिमांड थी, हमने कई फोरम पे कहा भी था। हमने 31 दिसंबर तक के लिए कहा था और उन्होंने 30 नवंबर तक के लिए इसको स्वीकार कर लिया है कि जो आईटीसी अवेलमेंट है लास्ट ईयर का, वो जो 30 सितंबर होता था टाइम बारिंग, वो लिमिटेशन बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया है। और करस्पॉन्डिंगली आउटपुट सप्लाईज भी 30 नवंबर तक अपलोड कर पाएंगे, 30 नवंबर तक आईटीसी क्लेम कर पाएंगे और 30 नवंबर तक जीएसटीआर 3B में उसका इम्पैक्ट भी दे पाएंगे। क्योंकि जो ऑडिट होते थे वो जनरली सितंबर में होते थे, तो इसलिए बहुत सारे आईटीसी जो है अनअवेल्ड रह जाता था, तो उसको बढ़ा के उन्होंने 30 नवंबर कर दिया है। और भी काफी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इसमें उन्होंने फाइनेंस बिल में प्रपोज किए हैं। Thank you, Rohit. I believe, once the final budget, everybody reads it, there'll be a lot of, amendments in the Income Tax Act as direct tax as well as the indirect taxes. So I definitely hope there'll be a lot of changes. Anyways, we had a wonderful session today, and सबकी बात ये निकल कर आई है कि the budget has been a good budget, progressive economy. कई इनोवेशंस हैं अबाउट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वो मेरा मानना ये है कि जब तक उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक वो चेंजेस नहीं आ पाएंगे, एंड वी विल हैव टू बेयर इट विद देम टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Anyways, now I would request Anil Gupta ji to give the official vote of thanks from BVSS forum. Thank you. कल मैं डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम उनको सुन रहा था और आज सुबह ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में अंकलेश्वर अय्यर को मैंने पढ़ा। दोनों ने एक नई टर्म यूज की, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, वो बोर बजट, उसको उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है। तो ये क्या कंसेप्ट आ गया है, और ये बोर बजट पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। वो रात को डॉक्टर अरविंद बोल के गया और ये सुबह इसने फिर से लिखा कि जिस बजट के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और जो बजट कैपिटल इंटेंसिव होता है, उसको पब्लिक को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप पिछले 3-4 साल की अगर जर्नी देखेंगे इस सरकार की, तो आज आप जब घरों से निकलते हैं तो आपको जगह जगह पर अच्छी सड़कें मिलती हैं। तो ये बोर बजट की निशानी है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले टाइम में ऐसे और बोर बजट्स आएंगे, और जो कैपेक्स है और जो ये जाल बिछेगा ये काम आएगा हमारे। एक मेरी नवल जी से रिक्वेस्ट है कि आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही हैं कि जो हमारे व्यूज एक्सेप्ट हुए हैं, कुछ नहीं एक्सेप्ट हुए हैं। तो अगर आप एक कोई नोट बना सकें आप और विपिन जी मिलके कि जो एक्सेप्ट हुए हैं तो वो हमें पब्लिक में पहुंचाने चाहिए। हम किसी से मिलने नहीं गए, लेकिन हमने अगर कोई चीज भेजी और सरकार के उस बजट में कवर्ड है तो अपने आप में हमारी सरकार की कहीं थॉट प्रोसेस मिलता है, ये हमें कन्वे करना चाहिए। तीसरा जी ठीक है, एक बात हमें बड़ी जोर से कहनी चाहिए हम सबको मिलके। क्या है, इस समय वर्ल्ड ओवर सारी इकोनॉमीज डाउन जा रही हैं, हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैंने शुरू में भी ये बात कही। और इसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो 150 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, ये एक ऐसा मोमेंटस है, ये इतना मतलब मॉन्यूमेंट है अपने आप में एक, कि जब स्टार्ट हुआ था तो जैसे मेरे को पर्सनली मुझे नहीं लगता था कि हम इतना बड़ा एक फिगर तक पहुंच पाएंगे। संसार के अंदर एक हिस्टोरिकल वैक्सीनेशन हुआ है, और उसका प्लस इम्पैक्ट क्या है कि ये जो ये थर्ड वेव आई, उस थर्ड वेव को हमें अनटच करके और निकल गई, जस्ट छूती हुई निकली है, कुछ कर नहीं पाई। तो इसका भी इकोनॉमी से रिलेशन है, ये नहीं भूलना चाहिए। इकोनॉमी तब चलती है जब सर्टेनिटी और हेल्थ हो। तो लोगों के अंदर हेल्थ के लिए अगर सर्टेनिटी आ रही है तो इस सरकार की बहुत बड़ी एक ये सोच है। इन्फ्लेशन के ऊपर एक बात नहीं भूलनी चाहिए, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से मतलब ये है
कि ये ऑयल रिलेटेड इन्फ्लेशन है, तो ऑयल हमारे हाथ में नहीं है। तो जब भी हम इस सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं इन्फ्लेशन के लिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे कंट्री की पॉलिसीज के कारण से नहीं हो रहा है, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो इसको भी हमें कहीं ना कहीं पर एक्सेप्शन के अंदर इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को डालना चाहिए। तो एक बात कह के मैं सबका तो धन्यवाद है कि आप सब लोग जुड़े, और इस तरह का मुझे लगता है कि एक हमें टैक्सेशन के ऊपर मनु जी और बलदेव जी मिलकर सोचेंगे ही कि टैक्स को लेके, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेके क्लॉज वाइज क्लॉज डिस्कशन हो सके, ताकि सबका नॉलेज जो है वो अपडेट हो जाए। तो वो कोई ना कोई आप सेमिनार सोच ही रहे होंगे। आने वाला जो टाइम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इंफ्रा शेयर्स या ये इकोनॉमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि नाउ वी आर अ डेवलप्ड कंट्री। ये बोलना कर दीजिए कि हम विकासशील हैं, हम विकसित हैं। जब तक हम अपनी साइकोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे, आप विकसित हो भी नहीं पाएंगे। इससे ज्यादा विकास नहीं हो सकता कि जब आप घरों से निकलते हैं तो निकलते ही आपको जो सड़कें मिलती हैं वो सच में ही वो आपको उसमें शक्ल देखने का मन करता है। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। मनु जी, शायद पंचजन्य से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, आप चैट बॉक्स देखिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोल सकते हो जी। हेलो। जी, आवाज आई क्या? बोलिए। जी जी जी, ये है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इस बजट में कई घोषणाएं हम देख रहे हैं। 25,000 किलोमीटर की जो हाईवेज हैं, उसके अलावा बंदरगाह और कार्गो टर्मिनल वगैरह। इसमें एक बात ये भी आई कि इनको टियर 2 और टियर 3 शहरों से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा कृषि और एमएसएमई क्षेत्र में फोकस किया गया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात की गई। क्या इससे ये नहीं लगता कि विकास का विकेंद्रीकरण हो रहा है और अर्थव्यवस्था का आधार अब इंडिया से भारत की ओर बढ़ रहा है? Raji, I would request you to answer the question. आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सरकार का प्रयास भारत की ओर ले जाने का, विकास का लक्ष्य शुरू से है। और इस बजट में जो घोषणाएं हैं उनमें उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन साफ नजर आ रहा है कि हम किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और रूरल एरियाज में, कंट्री साइड में विकास को ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाए। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अनिल जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं इसमें एक दो विषय और ऐड करूंगा। एक और अनाउंसमेंट हुआ जो डिफेंस सेक्टर में हुआ। देखिए, वो उसमें उन्होंने कहा कि पहले प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर से थी, वो 30% तक थी, उसको अब 68%, 68% कर दिया गया। तो बहुत, जो गवर्नमेंट की डिफेंस सेक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी है। और जब ये 68% डोमेस्टिक प्रोडक्शन से लिया जाएगा, तो ये भी एक, मुझे लगता है, एक स्टेप है जहां पर आप अपने सेक्टर्स को, एमएसएमई सेक्टर्स को इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी तरह से कुछ एक दो स्टेप, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की, तो वो भी एक स्टेप है जो हम जहां हम कह सकते हैं कि अब हम भारत की तरफ देख रहे हैं, इंडिया की वजह। अनिल जी ने डिफेंस वाली बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% से 68% पे ले जाना, मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक सेक्टर के लिए होगी, उसमें कितना बड़ा इजाफा होने वाला है इस पॉलिसी से, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स क्रिएट होने वाले हैं जो हम हमेशा बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जी संदीप जी। इसमें एक प्रश्न और है, कृषि से संबंधित है। वो जो कृषि क्षेत्र में हमने आज सुना कि 2-3 साल पहले भी ये बजट में आया था कि ऐसी एक पॉलिसी आएगी जो प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती की तरफ बढ़ने का। इस बार उन्होंने क्लियर किया कि गंगा के किनारे के, जो बहुत लंबी नदी है, उत्तराखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक, और उसके दोनों 5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती का, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से और जो खाद्यान्न संकट हम भविष्य में देखते हैं, उन दोनों के दृष्टि से कितना कामयाब होगा? रोहित जी, आपका क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में? देखिए, इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और जो पहलू है वो ये है कि जैसे जैसे आयुर्वेद और हमारी मेडिसिनल, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं,
उनकी खपत, उनकी जो निर्यात बढ़ रहा है, तो कहीं ये आ रहा था कि ये इनका रॉ मटेरियल अब कहाँ से आ गया, क्या हम जंगलों को वहां से ये सारी चीजें ले लेकर उनको खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो खेती है जिसमें प्राकृतिक खेती प्लस मेडिसिनल प्लांट्स, जो हमारे ट्रेडिशनल आइडेंटिफाइड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी खेती भी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा इससे कि हम अपने आयुर्वेद को भी बढ़ा पाएंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और नेचुरली जो कृषि में इसके साथ जुड़ेंगे उनका तो उनको लाभ तो होने ही वाला है। रोहित जी, मैं एक बात मैक्रो लेवल पे कहना चाहूंगा, क्योंकि माइक्रो लेवल पे ये इशू बहुत डिस्कशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। जैसे कि अभी अनिल गुप्ता जी ने भी ये कहा कि हम विकासशील देश नहीं, विकसित हो गए हैं। हम विकसित देश हम अपने आप को बोलें, और वो आत्म सम्मान जो है और आत्मनिर्भर भारत जो है, तो जो बात अभी प्रश्न रखी गई है, आप उसको इस तरह से देखिए कि जब हम कॉलोनाइजेशन से डीकॉलोनाइजेशन की ओर जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं, तो वो यू टर्न बहुत लंबा होता है। कोई भी स्टीप यू टर्न आपको गिरा देता है और आप उसको कॉप अप नहीं कर पाते। तो ये जो सारी पॉलिसीज हैं, ये आपको धीरे 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 आपको अपने आत्मनिर्भर और आत्म जिसे कहना चाहिए डीकॉलोनाइज भारत, और भारत की स्वयं उसमें आयुर्वेद भी होगा, उसमें योगा भी होगा, उसमें नेचुरोपैथी भी होगी, उसमें ये सारी चीजें होंगी। और ये जो पॉलिसी है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये मैक्रो लेवल का बजट नहीं है, ये माइक्रो लेवल का बजट है, और माइक्रो लेवल पे बहुत छोटी छोटी चीजों को करेक्ट किया जा रहा है अब। तो इस तरह से मुझे लगता है इस सबको देखना चाहिए, और निश्चित रूप से हम एक यू टर्न की तरफ चल संदीप जी, पड़ेंगे। इसमें एक बात और भी है। एक बात मैं ऐड करूंगा इसमें। एक मिनट राजीव, मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ। एक जो पॉइंट समझने का ये है कि हमने पिछले हजारों साल की जो मानव मात्र ने यात्रा की है संसार में, तो उस यात्रा में जब इकोनॉमी और डेवलपमेंट को जोड़ते हैं तो नदियों का बहुत बड़ा रोल है, और नदियों के नजदीक ही सिटीज होती हैं। तो हमारे पास एक इतनी बड़ी नदी है जो हमारे लिए तो पूजनीय है ही है, लेकिन उसके पूजनीय होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि उसके आसपास आबादी है। तो उस आबादी को रिकॉग्नाइज करते हुए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड आबादी है, तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है ना, वो सारी की सारी आबादी को एक स्पर्ट मिलेगा और परकोलेशन होगा उस ग्रोथ का। ये अपने आप में ये जो पॉलिसी आई है, ये जरूर एक मील का पत्थर साबित होगी। राजी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाह रहा था, आपने जो प्रश्न किया था कि ऑर्गेनिक खेती को जो एम्फेसिस इस बजट में दिया गया है, तो ये किसानों की आय को बढ़ाने में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। हाँ जी, आप देखो, सिक्किम में ऑर्गेनिक खेती लगभग 100% है, तो वहाँ के किसान कितने समृद्ध हैं। तो ऑर्गेनिक खेती की जो रेट है, क्योंकि ये तो फैशन है, बड़े लोग तो ऑर्गेनिक के नाम पर आजकल देते आ रहे हैं। तो हमको बस यही तो चाहिए कि उनसे पैसा लेके और किसानों की जेब में डालना है, तो ये अपने आप एक उसका रास्ता बन जाएगा। ये संदीप जी, अनिल जी, एक क्वेश्चन उनका क्रिप्टो करेंसी पे है, मैं उसको आंसर देना चाहूंगा। दे दो। आप पहले क्वेश्चन रिपीट करो अनिल जी। हाँ, उसमें ये Q&A में एक क्वेश्चन उन्होंने डाला है, इस बजट में क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स की बात की गई है, यहाँ तक कि घाटा होने पर भी टैक्स लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा डिजिटल रुपए भी ब्लैक चेन का उपयोग करके लाने की बात की गई है। क्या इन उपयोगों से क्रिप्टो करेंसी के नकारात्मक पक्षों से भारतीय जनता को बचाव हो सकेगा? तो संदीप जी, मेरा इसमें जवाब यही है कि जो अभी प्रयास हुए हैं, ये 3/4 जनता को बचाने के लिए हुए हैं, क्योंकि क्रिप्टो के बिना अब गुजारा नहीं है। तो इसलिए जो हमारा केंद्रीय बैंक अपनी करेंसी ला रहा है, डिजिटल करेंसी, तो वो जो एक आज यूथ की रिक्वायरमेंट है और एक पूरे व्यापार की भी रिक्वायरमेंट है, तो डिजिटल करेंसी आनी चाहिए। तो एक तो उससे वो पूरा हो रहा है। दूसरा जो दिक्कत आ रही है, जो जहां मुझे लगता है समस्या आएगी, वो है कि जो जितनी भी डिजिटल करेंसीज अवेलेबल थी, चाहे वो इथेरियम हो या चाहे वो बिटकॉइन हो, उनको अब एक तरह से डिजिटल एसेट की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया। जब भी किसी एसेट को, किसी चीज को एक एसेट की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक्सचेंज ऑफ मीडियम बन जाता है, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो कहीं ना कहीं
ये हम लोगों की पहले डिमांड भी रही कि क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई भी करेंसी जिसका उसका ओरिजिनेटर कौन है और उसके पीछे क्या जो अंडरलाइंग एसेट क्या है, अगर उसकी जानकारी नहीं है तो ऐसी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, उसको हमें बैन करना चाहिए। क्योंकि और जहां तक आपने देखा हो कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत से आजकल कॉइन्स और तरह के हैं जो बेसिकली जहां पर उनके कौन बनाने वाला है उसके पीछे कहीं सोना भी रखा हुआ है, कहीं दूसरी करेंसीज भी हैं, वो उनको तो रिकॉग्नाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, पर सब करेंसीज को रिकॉग्नाइज करके हमने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसको एक रिकॉग्निशन देकर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये ठीक नहीं हुआ है। तो उसमें अभी कुछ नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पहला स्टेप है क्रिप्टो करेंसी को समझने की दिशा में। हाँ, लगभग। पर क्या है ना कि अभी एक बार ये रिकॉग्नाइज करने के बाद अब इसको डी रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टैक्स एक बड़ा एक एंगल है उसका कि आपने टैक्स ले लिया, पर क्या अब देखिए आप इसकी जो मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो वेरिएशंस हैं वो इतने ज्यादा हैं, और हमारे यहाँ पर आज अब अगर आप देखो तो कह रहे हैं कि कितने मिलियन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो इन्वेस्ट किया है उसने कैपिटल एप्रिसिएशन की, उसको लगता है कि मेरा जो 100 रुपया है वो कहीं 2 लाख रुपया होने वाला है, और जो ऐसा होना नहीं है। ये दीज आर जो बहुत सी इसमें पॉन्जी स्कीम्स हैं कि आज पैसा दिख रहा है कल नहीं होने वाला है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को जिसने छोटा छोटा पैसा उसमें लगाया उसको हम कैसे बचा पाते, तो वही तरीका था उसका कि इसको रेगुलेट करके कि कौन इसके पीछे, अगर वो जानकारी हो तब तो ठीक है, जब जानकारी नहीं है तो किसको पकड़ेंगे कल कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उस एक्सटेंट तक ये स्टेप ठीक नहीं। एक और सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। संदीप जी इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं थोड़ा सा एक बात और जरा कहना चाहूंगा कि देखो हमें क्रिप्टो करेंसी का मतलब है डिजिटल करेंसी, उसके अगेंस्ट नहीं है ना हम है ना हमारी सरकार है, क्योंकि इस बजट में दो एक साथ साइमल्टेनियस अनाउंसमेंट हैं कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी इशू करेगा। इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी को तो हमने रिकॉग्निशन दे दी कि हम उसके अगेंस्ट नहीं है, और आज से 25-30 साल के बाद पेपर करेंसी से ज्यादा हो सकता है क्रिप्टो करेंसी चले। तो ये तो फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब है डिजिटल करेंसी। लेकिन परेशानी कहाँ है, जहां इसमें पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि इस समय जो क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं उसमें मेनली बिटकॉइन है या लिथियम है या दूसरी है, उनमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। उनमें जितना भी टैक्स इवेजन, इल मनी, वो सब उसमें मूव हो रहा है। तो सरकार के कंट्रोल से अगर डिजिटल करेंसी चलेगी, और तो एक तो ये अनाउंसमेंट हो गया कि सरकार की कंट्रोल से चलेगी, और दूसरा अनाउंसमेंट ये हो गया कि जो प्रेजेंट क्रिप्टो करेंसी है या उसमें अगर आप जो सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती उसमें अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां आपको फ्लैट टैक्स लगेगा, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, ये भी उन्होंने बोला है। केवल आपको फ्लैट टैक्स जो भी प्रॉफिट होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, तो उसको डिस्करेज करने के लिए, प्लस टीडीएस भी होगा उसमें, जिससे कि किसी भी ट्रांजेक्शन पर आप टीडीएस भी दें, शुरू में कट जाए, जिससे कि ट्रांजेक्शन भी ट्रैक आउट हो सके। तो इस तरह से दोनों तरफ से उन्होंने जो नॉन ट्रांसपेरेंट करेंसी है उसको चेक करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रावधान लेके आए। नावल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस राज जी और अनिल शर्मा जी की बात को एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं कि ये क्रिप्टो करेंसी अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, इट वाज अ स्पेकुलेटिव नेचर, बिकॉज अंडरलाइंग एसेट्स आपको पता ही नहीं क्या है, तो क्योंकि आप स्पेकुलेटिव इनकम कर रहे हैं तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगाना जायज लगता है। चलिए, so now we take up the last question, सुनील नागपाल जी का है। संदीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे? और जी मैं एक चीज और है, ये जो डिजिटल भारत वाला विषय है, जिसमें कि हम बैंकिंग क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो बिल्कुल निचले लेवल तक पेनिट्रेशन वाया डिजिटल टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी हम ड्रोन की बात किए हैं, और हमने जिस तरह से स्टार्टअप को, यानी जो नया कॉन्सेप्ट है, स्टार्टअप को कृषि से जोड़ा है, और विश्वविद्यालय हमने डिजिटल बनाने की बात की है, तो इसमें क्या एक ऐसी आवश्यकता नहीं महसूस होती कि
जो इंटरनेट की व्यवस्था है कंप्लीट, जो भी हम बाहर से लेते हैं, वो हमें अपने यहाँ बनानी होगी। इंटरनेट बाहर से लेते हैं अपने आप बनाने का, इसका मीनिंग क्या है? नहीं, जैसे कि जो हम सेवाएं लेते हैं इंटरनेट की, हाँ, वह कहीं और बेस्ड है। ओके ओके, वहाँ डेटा की बात करें बेसिकली, सर्वर इंडिया से बात करें। ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में जैसे हमने सांख्य वाहिनी योजना की बात हुई थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने कवर किया है इस बार। जी जी जी, बहुत बहुत बड़ा उन्होंने बजट में कही है, आपने नोट किया होगा, जहां उन्होंने ये कहा है तो फाइबर जो है ये पूरे इंडिया में बिछ रहा है, तो ये अपने आप में काम आएगा। और डेटा को लेके भी बात कही है उन्होंने कि डेटा स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी, डेटा स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो शायद जो आप बात कह रहे हैं उसको लेके गवर्नमेंट बजट भी, और बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का बिल जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपकी जो इशू है उसको सरकार एड्रेस कर रही है, और इट विल डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ। जी धन्यवाद। ठीक है, मुझे लगता है जो एक विषय संदीप जी कहना चाह रहे थे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW हम यूज कर रहे हैं, आगे फ्यूचरिस्टिकली भारत वाइड वेब BWW इस तरह का भी कोई, क्योंकि चाइना में जिस तरह से वेब चल रहा है, देखिए इसको आप उस तरीके से मत लीजिए कि हम किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम WWW पे ही डिपेंडेंट क्यों रहे, ये सवाल भी उठना चाहिए। जी, एक पॉइंट और संदीप जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सरकार ने इस बार 3 नए सेक्टर्स की ओर ध्यान दिलाया है पब्लिकली। सेक्टर तो सबको पता है, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान नहीं जाता था। वो एनिमेशन, विजुअल और गेमिंग, इसके लिए वो पूरा का पूरा एक टास्क फोर्स क्रिएट कर रही है, और जो यंगर जनरेशन इसकी तरफ जा रही है उसको और अच्छी एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सके, और ये कैसे इस इंडस्ट्री का इकोनॉमी के लिए यूज हो सके, ये भी अपने आप में इस सरकार का दूरदृष्टि दिखाती है। यानी सह अस्तित्व, संतुलन और समावेश पे टिका है ये बजट। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने कहा, और आपने इतना समय दिया जी, और ये सब हमारे साथ इंटरेक्शन किया, उसके लिए आपका और हितेश जी का और 5 जने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। 2 क्वेश्चन हैं, एक तो व्हाट इज द गिफ्ट टैक्स रेट ऑन वर्चुअल एसेट्स। तो बजट में बात की गई कि जो गिफ्ट है इट विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ द रिसिप्टेंट, सो उसकी इनकम में ऐड बैक होगी, सो व्हाटएवर द टैक्स रेट देयर वुड बी एप्लीकेबल। लास्ट क्वेश्चन है, देश की रेटिंग किससे बढ़ती है? हाँ जी राजीव, क्या क्या प्रश्न है? देश की रेटिंग किससे बढ़ती है? देखो, देश की रेटिंग अपने आप में तो अलग से कोई ऐसी रेटिंग एजेंसी नहीं है जो किसी कंट्री की रेटिंग करती है, लेकिन अलग अलग विषयों की होती है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, तो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडेक्स होता है, GDP का होता है, तो ये अलग अलग क्षेत्र वाइज होता है। तो हमारे देश में कि जहां तक रेटिंग का सवाल है, कि इन सब चीजों का जो कंबाइंड इम्पैक्ट आएगा उससे देश की जो भी रेटिंग है वो बढ़ेगी। केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से रेटिंग बढ़ जाए, ये जो एक धारणा है या कल्चर है या ये जो विचार है, शायद ये ठीक नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोंग विद हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस, वो जो इंक्रीज होगा, तो इन दोनों इंडेक्स को अगर हम एवरेज आउट करेंगे तो उससे जो निकल के आएगा वो शायद हो सकता है कि देश की रेटिंग को बढ़ाए। सर मैं इसका एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ। राज सर ने थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर दिया, बट प्रैक्टिकल लेवल पे जिसके पास जितना दम, जितनी ताकत है, उसी से रेटिंग बढ़ती है जी। अभी तक लंदन बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, जैसे जैसे इकोनॉमिक पावर कम हुई और अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, तो सब नहीं, इकोनॉमिक पावर क्या हुआ, लीडरशिप की पावर बढ़ रही है। लीडरशिप में दम चाहिए, ताकत चाहिए, लीडरशिप में ताकत। ये आपने राजीव बात कही है, कल मैं पढ़ रहा था, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। जैसे आपने कहा तरह तरह के इंडेक्स होते हैं, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया जो है 46 से 81 पे आ गया है। तो कितना जंप मिला है उसको, इंडिया को, तो ये अपने आप में क्रेडिट रेटिंग की ओर ही जाती है। ये देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है जी कि एक लीडर, एक सिंगल पर्सन किसी भी देश को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। हमारे पास नजर आ रहा है, नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है। और हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं, अगर हम पास्ट का देखें, एक आप इजराइल को देखो, सिंगापुर को देखो, एक आदमी ने, चाइना भी फॉर दैट मैटर, एक आदमी ने बना दिया। और एक तरफ अर्जेंटीना जो इतना ग्रोथ पाथ पे था, और एक गलत आदमी आ गया, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इस तरह से एक आदमी, तो हमारे पास तो एक आदमी ऐसा है जो कि 100 के बराबर एक है। तो वो तो मतलब अगर ये
मोदी जी अगर हम सबकी इच्छा यही है कि 20 साल अगर यहाँ रह लिए और ये चल गए तो देश निश्चित रूप से अभी चाहे विकसित नहीं है, मैं तो अनिल जी से डिफर करूंगा, अभी तो विकसित नहीं है, लेकिन हम जरूर विकसित हो जाएंगे, वर्ल्ड की 2nd नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। सुशील जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? सक्सेसर तो बीजेपी से, सक्सेसर तो बीवीएसएस से आने वाला है। देखो जी, रेटिंग किससे बढ़ती है, ये बात की गई। तो मुझे लगता है जो अभी अपने राज्य ने जो कहा, मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। खाली फिजिकल एसेट से नहीं बढ़ती, उस देश की जनता उस देश के बारे में क्या विचार रखती है उससे बढ़ती है। एक तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सारी बातों को अगर निचोड़ें और एक लाइन में कहें तो जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों के शांति प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। थैंक यू।